So for the weather deviation, as you said rightly, for the weather deviation, what we need to do? Suppose if I find that weather over Aurangabad is not good, okay? We are flying from Mumbai to Nagpur. We are flying from Mumbai to Nagpur. And we have received an en route warning that weather over Aurangabad is not good. We may see some kind of thunderstorm or anything. So what normally we do, we can deviate for 30 nautical mile in a distance, either left or right, any side. Okay. Then we will maintain that deviated track for some distance. Okay. We can maintain to escape with this danger area, that is thunderstorm or any kind of heavy cloud, heavy rain. That will be at least that is a safety hazard for us, right? We cannot fly into that. So till the time we can avoid this bad turbulent region, after spending some time with some distance, we can rejoin this route. So this is deviation of a bad weather. Okay. हमारा ये रहता है कि we can deviate for at least 30 nautical mile or at maximum 30 nautical mile, 30 to 40, not more than that. ठीक है. Standard अपना रहता है 30. We can deviate from original route, either left side or right side. We will maintain our deviated track. Once we have deviated till here, फिर हमको अपने original route के parallel fly करना है. After spending some time, we can rejoin this route again and can resume our normal navigation. Okay. So this is the thing about weather deviation. Shall I give a example of call structure also, right? Okay. Yes, sir. Note down a plan. Open the chart first chart number 1. Our plan will be as per our conventional plan, that is Mumbai to Nagpur. That is easy to understand, right? Later we'll discuss some on difficult route also. For now, look at the chart number 1. Suppose if the flight plan is such, aircraft registration, note down this plan in your notebook so you can have future reference of also. Victor Tango Alpha November Kilo. Suppose this is a registration. We have a plan from Mumbai to Nagpur. Right now, Airbus type, aircraft type, that is Airbus 320. Then flight level 2980. Route is our Golf 450. Okay. Mumbai to Nagpur. Vector turbulence medium. IFR, scheduled, equipment standard. Anything I'm missing? Time of departure. Time of departure. Let it be 1015. Okay. So this much information is okay, right? Your question will be such. Yes, sir. Your question will be such. If you look at the chart 1, your question will be such. Every time, every situation-based question you will get in reference to any position also. Only, sorry. Means हमेशा किसी न किसी position, किसी न किसी VOR के reference में आपको situation-based question मिलेंगे. You need to always identify at what position you are going to face this difficulty or you are going to see this situation, this condition. So this will also, bad weather deviation or bad weather warning will also come to you through any position only. So the question will be, you are 20 DME, okay, to Opaka.
like this, and receive bad weather indication, over Opaka. So this is the standard question. You are about to reach some location and you have identified that there is a bad weather, right? See how this call will go. Have you written this question? Yes, sir. Okay. This call will go such. Every time you just need to tell your position, then only you can request for anything. Okay? This call will go such. If you are flying Mumbai to Nagpur, you are 20 nautical mile to Opaka. So this call will go such. Mumbai approach, Victor Tango Alpha November Kilo on 122.7, Airbus 320, IFR Mumbai to Nagpur, flight level 290, Golf 450, radial 253, DMA 20, inbound Opaka, time now 1050, received bad weather indication over Opaka. This is your question, right? Now, what action you want to take against this? That will be would like to turn, would means would like to deviate. So this is would like to turn right for 30 nautical mile and fly parallel on deviated track and fly parallel on deviated track like this. Okay? Will rejoin. What is our approved route? Goal 450. Will rejoin goal 450 over, let's suppose, far from Aurangabad. Or you can say will rejoin goal 450 either over Aurangabad, that is another MRP after Opaka, or you can say will join goal 450 over Dubox. Okay? Wherever you are going to rejoin, okay, you can estimate that directly because you are on a deviated track. If you are joining near Dubox, then you can skip to say anything about Aurangabad. Okay? Like this. If you look at the chart, you will get it. Aurangabad is in between. Dubox is here. Opaka is here. So if you are deviating from Opaka only, and if you are joining to Dubox, your estimates will be Dubox directly. No need to say anything about Aurangabad. So here your estimates will also revise according to that only. Like we'll rejoin goal 450 over Dubox. Okay? Suppose we'll rejoin goal 450 over Dubox. Okay? Now what about other thing? Estimates. Estimating Dubox 1200. Okay? After Dubox, we have directly Nagpur.
ETA correction. This is deviation, right? So now your ETA will revise because you are going to spend some time in deviation. So you will say revised ETA Nagpur 1320 request permission or request clearance. Victor Tango Alpha November Kilo. Got it? What was the situation? Yes, sir. That you have received bad weather over Opaka. So how this call will go? You are calling Mumbai approach that you are Victor Tango Alpha November Kilo on 122.7. Your aircraft is Airbus 320. You are IFR from Mumbai to Nagpur. Flying on flight level 290, code 450 route you are following. Radial 253, DME 20 inbound Opaka. Right. Your time now 1050. You have received bad weather indication over Opaka. That's why you would like to turn right for 30 nautical mile and fly parallel on deviated track. Right from Opaka at 30 nautical mile, you would like to fly parallel on deviated track. Now you again want to join your approved route, that is goal 450 over DevOps. You are estimating DevOps on 1200. You have revised your ETA to the Nagpur, that is 1320. Now at last you are asking for permission or clearance. What permission and clearance you are requesting for? Two things. First one about your deviation plan and rejoin. Whenever you are rerouting, rejoining anything, you need to ask for permission. In this call, your main focus had taken this deviation. That's why your rejoining also comes under this only. So at last, if you say request permission or clearance, after saying this much things, they will understand, okay, you want permission for deviation as well as rejoining, right? So this is the practice of bad weather deviation. Okay, you can deviate right or left for 30 nautical mile and you can fly parallel on deviated track. Parallel on deviated track means you are going to fly at the same point parallel to your approved route, or just you want to maintain continuation towards your destination. ऐसा नहीं कि गोल 450 से 30 nautical mile deviate हुए तो parallel मतलब straight चलते रह जाएं. You want to make continuation towards your destination. It means parallel on your deviated track, either parallel to your approved route or anyhow you just want to make continuation towards your approved destination, right? So the key points are, Yes, sir. The key points are your deviation plan, your rejoining request, okay? Your rejoining request, and this one revised ETA, okay? Because you have deviated some time for some time, so your ETA will be revised now, okay? So any kind of deviation call, you are going to say revised ETA. Got it? Yes, sir. Very Sir, good. for this same question, if we go through the another chart, Mhm. then we have to call Mumbai control because their Mhm. range is different. If you are 20 nautical mile, in the older chart, you won't see anywhere Yes, yes, sir. CTA, right? Directly आपको कंट्रोल के बाद वो मिल जाता है, कंट्रोल सॉरी टावर के बाद कंट्रोल मिल जाता है, right? No, sir. Mumbai CTA is written, sir. It is Mumbai city. Mumbai CTA, and its range is flight level 1452, flight level 460. अच्छा, for control, right? हाँ. Yes, yes, sir. Yes. Okay. For that only, you need to call
2980. No, no, no. See, if you see the range of approach का range अगर आप देखोगे, that is for lower limit is flight level 7000, and above than that you are free to any infinite airspace, right? Infinite airspace. There is no limitation of over airspace. Yes, sir. That is in version 2 chart. But if we see Version. the other chart, sir. Okay, the first one, right? Yes, yes, sir. Then we have to call Mumbai control as per Mumbai that. control. Yes, yes. As per this flight level. Yes. Very good. Very good observation. Because our altitude is flight level 2980, and on the chart number 1, this is flight level 15145 to flight level 460. Yes, definitely. You need to call Mumbai control. Very good. Yes, sir. Done. So this is the call structure. You just need to be very focused on the exam. Whatever the charts you are going to see, that's why this intelligence is important. Very good that you have understand what is the important role, how to find the correct etc. एग्जाम में जो सा भी चार्ट मिले आपको उसके अकॉर्डिंग कॉल दे देना, बिकॉज दिस सदर्न रीजन WPC has the updated chart version 2. Don't know why Delhi and Mumbai has kept that older one till the time, so you can plan accordingly. Okay, sir. Okay. No. Better to understand call structure, and you know what, how to call, how to find a correct etc. Good, very good. जैसा भी चार्ट मिले उसके अकॉर्डिंग कॉल दे देना है, बट स्ट्रक्चर सेम रखना, ठीक है? Yes, sir. Can you repeat what is the key points over the weather deviation call? Yes, sir. Key point is first we have to, after position reporting, we need to tell received bad weather indication over the Opaka or the specified place. Yes. Then we have to mention we would like to turn right for some distance, like maximum it will be 40 nautical miles within that, and we have to fly parallel on the deviated track, and then we'll rejoin at the point where we are rejoining. That also we will mention that we will rejoin wall 450 over D box. Then we have to give the estimation. Then we have to say the revised ETA. Yes. For Nagpur, the destination aerodrome. Very good. Very good. Now suppose that you are planning to deviate as per the previous call, but at the same time you don't have contact with ATC. Okay, you want to deviate because of bad weather, but at the same time you don't have contact with ATC. How this will go? What situation at very first, what situation it will be made if you have deviation and you have RCF? It will be a pan condition. Very good. It will be a pan situation. Every time whenever you are facing RCF and you need to deviate because of the situation, that will be a pan. So just write a call that you need to plan a deviation and at the same time you are having RCF. Okay. In the previous question only, here you can see like this over Opaka, and you have negative contact with ATC. Okay. Because if weather is bad, we are forced to deviate. We can't do anything. Okay. So as per this question only, how it will go? It will start with pan. Very good. So this will go pan. All aircraft in the vicinity of Opaka, Victor Tango
Alpha November Kilo, Airbus 320, IFR Mumbai to Nagpur, negative contact with ATC. Okay. Received bad weather ahead, or received bad weather indication over Opaka as per the question. Okay. If you see bad weather just ahead of you only, that also you need to deviate. But in the question, if it is mentioned, you have received a bad weather over Opaka, so it's good to mention that received bad weather indication over Opaka. Okay. Present position, flight level 350, Golf 450, correction, flight level 290, it was right. Flight level 290, Golf 450, radial 253, DME 20, inbound Opaka, time now 1050, like this. Okay. It's all about your position report. Now, what the action you are going to take? You will say deviating at on. Okay. Or you can say with another English example, deviating on. But bar on bolna, that's not good. That then you can say deviating at on. Okay. Deviating at on, turning right for 30 nautical mile, then you can say will fly parallel on. Sir, Mhm. Go ahead. deviating at On खुद पे, अपने पे, deviating at on, right? yes, deviating at on खुद से deviate कर रहे हैं. और over this, turning. हाँ, this is not over. This is also deviating at on or deviating on. At and on, Okay. these two are prepositions, right? Sometimes the use of continuous on and on, that will make you confused. So better to use at. Okay. In the many calls, you can see on also, deviating on. Okay. So better to use deviating at on, turning right for 30 nautical mile. Okay. Will fly parallel on deviated track. Will fly parallel on deviated track. Okay. You are turning right for 30 nautical mile and you will fly parallel on deviated track. Okay. Now, what to see about others? इससे दूसरे को क्या लेना देना है? Because you are deviating at your own and you don't know whatever the aircrafts is behind you, near you, or ahead of you. So you can say all exterior lights on. Keep a lookout. ठीक है? Victor Tango Alpha November Kilo. Okay. Now just review or call whatever you have given. Just review it. Have you going? Are you going right or not? What is this?
This is a pan situation. You have told pan. You are sending warning to all aircraft in the vicinity of Opaka. Okay? This is the structure because you are having RCF. You don't know which ATC will hear you, but you are deviating. So you are going to disturb others also. You are deviating at your own. खुद से deviate कर रहे हो, खुद के decision पे. So you are going to disturb every other aircraft in the vicinity of you. That's why you have sending a warning. All aircraft in the vicinity of Opaka. You are Victor Tango Alpha November Kilo, Airbus 320, flying IFR from Mumbai to Nagpur. You have negative contact with ATC, that is a standard RCF phraseology. You are receiving bad weather over Opaka. Your present position is flight level 290. You are following code 450 as a route. Radial 253. You are 20 nautical mile inbound Opaka. You are having time now 1050. Now this about your position. What you are doing, what you are going to do in the action of bad weather, you are deviating at your own. Why? Because if you have a contact with ATC, then your deviation will be approved by ATC. Since you have RCF, you cannot get your approval with ATC. That's why you are deviating at your own. You are turning right for 30 nautical mile and you will fly parallel on deviated track. Okay? This is your deviation. Now your deviation may disturb others. That's why you are sending a caution message to all. All exterior lights on, keep a lookout. Note this statement as a standard deviation phraseology with RCF. जब भी आप deviate करोगे with RCF and you are sending a caution to all aircraft, आपको हमेशा ये बोलना है all exterior lights on, keep a lookout. ठीक है? Because you don't have any verbal communication. You are going to send the message with your exterior lights. ठीक है? Yes, sir. So this is the standard call about bad weather deviation plus RCF. Done? Yes, sir. Let me know any kind of confusion or any kind of doubt over structure. You want to add something, you can add as per your intelligence. If you want some more phrase, more words, let me know. Or if this is enough, then we'll go ahead. This is enough, right? Yes, sir. Okay. Now suppose this was the deviation. Okay? Deviation means you are deviating from your approved path for a moment and you will rejoin your previously approved path after some time. ठीक है? इसको बोलते हैं deviation. Deviation means कि आप थोड़े से भटक गए हो. Deviation means you are doing a minor change. ठीक है? In your plan. उसको बोलते हैं ना deviation थोड़े मोड़े को. Suppose you are going to see such a case, that this deviation will not work. Deviation से काम नहीं चलेगा. ठीक है? Why? Because sometimes you may find that in our coastal region, ठीक है? You are going to see in our coastal region, सुनामी जब आता है ना, ये पूरे रीजन को डिस्टर्ब कर देता है. ठीक है? केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका, Tamil Nadu, Andhra, all these states is being disturbed for a longer time period, 1 day, 2 day, 3 days, like this. Okay? So, if something is coming from international,
international. And if someone has planned for the Tamil Nadu in the heavy tsunami or heavy natural calamities like this coastal region, deviation won't work because how much you can deviate, how much deviation you can plan from here to here, here to here. Every region is disturbed. So you need rerouting. Okay? You need rerouting. You need to change your plan for some time. You need to stop your flight towards Tamil Nadu, Cochin, such coastal regions, right? So Yes. a bigger change in the deviation, you need rerouting. Okay? You need rerouting. Okay? This rerouting, you can plan on your ground also if sufficient information is being given to you before the departure. ठीक है, आपको पहले ही पता चल गया, since your destination is Chennai, you know that Chennai में सुनामी आया हुआ है and that region will be disturbed for 2 and 3 days. So you can plan your rerouting at the ground also with the discussion of tower. You can plan rerouting en route. Suppose you are having international flights, and the notum means notice to airmen issued by either Coast Guard or any Indian agency, not being known by any foreign countries. उसको नहीं पता था कि इंडिया में सुनामी आया हुआ है. जब वो आधे दूर आ गया, then he came to know कि इंडिया में तो सुनामी आया हुआ है, like this. So he can have rerouting on route also. रास्ते में भी वो reroute कर सकता है प्लान, right? टाइम रहते वो इधर गुजरात जाके लैंड कर जाए, मुंबई लैंड कर जाए, such regions they can plan. So this rerouting you can plan on ground also as well as on route, right? Yes, sir. Other than bad weather, rerouting can also be planned. Rerouting can also be planned if some of the major airspace is being restricted or prohibited. Suppose you are having flight from Mumbai to Hyderabad. Okay? Major airspace kept under NOTAM, military drill, anything. ठीक है? और आपको दिख जाएगा कंजेशन इन द प्लान, इन द चार्ट, कि वहां पे 4-5 रूट गए हुए हैं, ऐसा ऐसा करके, और 2 से 3 रूट में आपका नोटम लग गया. सो डेफिनेटली यू नीड रीरूटिंग. ठीक है, डेफिनेटली यू नीड रीरूटिंग. व्हेनेवर यू नीड टू चेंज योर अप्रूव्ड रूट, इट विल कम्स अंडर रीरूटिंग. ठीक है. तो जब भी आप देखोगे इन द चार्ट, इफ देयर आर मोर देन 2 and 3 routes, and if some kind of deviation is take you to the another route, this call will also comes under rerouting. Got it? 3 conditions, all 3 conditions. Either deviation, major deviation because of bad weather, okay, that you can plan on ground as well as on route, or if the deviation takes you to the another route. These 3 conditions comes under rerouting. Okay? Got it? Yes, sir. Now we are going to see the call structure and planning of rerouting. Okay? The flight plan will be same as per this only. Okay? Keep the flight plan same. We will add some information after the break of 2 minutes. Okay? Please have a sip of water. Take a break. We are going to see rerouting after this break. Okay? Yes.
So it was a call regarding rerouting, right? Okay, I missed that plan. I had changed the slide, did not know. Okay, take a fresh plan, don't worry. Take a fresh plan. Aircraft name, what do you want to put? Aircraft name means call sign. Vistara 467. Okay, Vistara 467. Suppose time of departure is 1015. Simultaneously, note this call in your notebook also. 1015, your aircraft is Airbus 320 with turbulence medium, IFR, scheduled flight, standard equipment. Okay. You are going to fly, suppose this time Mumbai to Bhopal. You are going to fly Mumbai to Bhopal. Okay. If you fly Mumbai to Bhopal, then you will have route Whiskey 10 Sierra, that is south, Whiskey 10 south, and that's it, Whiskey 10 south only. What chart you are having? A version 1 or version 2? Tell me. So both I was seeing, but I'll see version 2. So you are seeing from version 2? Take it version 2. Okay. 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 Then you will have Whiskey 10 south and Whiskey 10, right? Two routes you will have. Your flight level, take it 350, 35,000 feet, comes under RVSN. Then your alternate will be, alternate take it Indore, near to the Bhopal, right? So alternate will be Indore, VAID, Indore. Okay? This is the call, plan. This is your plan. Is there anything else you want to add in this? All points covered? Yes, sir. ठीक, means मोटा मोटी सब हो गया, इतने से काम चल जाएगा, right? Now your question is, on ground there are two situations about rerouting, right? On ground as well as en route. Support this on ground question. You are reported about bad weather. You are reported about bad weather over Songad. Okay? Over Songad while line up for takeoff. Sorry. Okay. While line up for takeoff, you have been reported about bad weather. Now discuss something wisely here. Let's discuss something wisely. Any kind of concurrence discussion about your flight plan, okay, doesn't matter where you are receiving this bad weather or any kind of alteration kind of thing, okay? Okay, any kind of concurrence discussion, alteration, rerouting, you need to discuss with tower and upper ATC service, tower and upper, either tower or approach or control. अगर आप एप्रन पे खड़ा रहने के बाद भी आपको बैड वेदर का इंडिकेशन आया बिफोर स्टार्टअप ओनली, फिर भी आप उसको ग्राउंड के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज ग्राउंड हैज देयर ओन लिमिटेशन. दे आर नॉट गोइंग टू लुक एट योर प्लान इन एनी केस. वो सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर का मूवमेंट देखेगा. टावर हैज सम कंसर्न ओवर योर फ्लाइट प्लान. Approach and control has definitely concern over your flight plan. So doesn't matter on the ground call, wherever you have been reported about bad weather en route, ठीक है, ग्राउंड पे रहते हुए, डोंट थिंक कि मैं एप्रॉन पे हूं तो ग्राउंड के साथ डिस्कस करने लगूं about change in route due to bad weather, because
ग्राउंड की उतनी अथॉरिटी नहीं है. गॉट इट? Yes, sir. So rerouting, change in flight plan, such bigger concepts and bigger query, you need to clarify with either tower or authority greater than tower, that is approach or control. Don't do this alteration call of your route with ground. ठीक है, कभी नहीं. भले एप्रन पे खड़ा हो, अब ये स्टार्ट भी नहीं किया इंजन, फिर भी don't take it with ground. Got it? In this Okay, sir. question, I had written this wide lineup for takeoff, especially so that initially you can understand that we need to discuss with tower. But अभी आपका concept clear हो गया. इस तरह के deviation वाले call ground के साथ कभी नहीं करना है. Either tower or authority higher than that. This question examiner may ask you. Examiner may ask. Definitely they are going to ask. ठीक है? अगर आप tower end Okay, से sir. स्टार्ट करोगे वो पूछेगा कि why did not with ground, you are on apron and you haven't start up your engine, then you can say sir ground has no concern in our with our flight plan. ठीक है? I have received bad weather. किधर से सुनेगो आप bad weather? ATIS. ठीक है? ATIS is being controlled by tower and higher authority than that. ATIS is not being controlled by ground in any case. ATIS is being controlled by either tower or higher authority of the tower, that is approach or control, और एक जो मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होते हैं किसी सिटी में एयरपोर्ट के बाहर, with them it is का इससे कंसर्न है. From where you come to know that you have bad weather? With ATIS or with the flight plan approval, FIC. ये सारे टावर या उससे एबव की अथॉरिटी हैं. That's why any kind of deviation or rerouting clearance you need to discuss with tower or authority greater than that. ठीक है? So this is the question that you have been reported about bad weather over Songarh. We have a plan from Mumbai to Bhopal. Let's see how this call will go. Just simple thing regarding your bad weather, you are going to reroute because आपको पहले ही पता चल गया कि सोनगढ़ के ऊपर बैड वेदर है and you don't have any other option. If you look at the chart, उसके सोनगढ़ के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, वही एक सिंगल रास्ता. सो आपको डेविएट करना ही करना पड़ेगा, सॉरी रीरूट करना ही करना पड़ेगा. डेविएशन से काम नहीं चलेगा. इफ यू हैव बीन डेविएटेड राइट साइड, आपको सोनगढ़ के पास VAR 33. VAR क्या होता है? कैन यू से? दैट इज एक रेड कलर का एरिया दिख रहा Sir, है. it is in. हाँ, Yes, sir. से It is a restricted area अंडर and it is falling under Mumbai. Mumbai. That's why this is restricted area. If you deviate right, this is not approved for you. If you deviate left, you are going to meet another route. So rerouting is only option for you. ठीक है? और अगर आप रीरूट लेफ्ट साइड में करोगे, कितना करोगे? 10 नॉटिकल माइल, 15 नॉटिकल माइल, 20 नॉटिकल माइल, इतना तो करोगे ना. तो एक अपना स्टैंडर्ड मार्जिन होता है कि जो आपका अप्रूव्ड रूट है उससे 15 नॉटिकल माइल का लेफ्ट राइट गार्डेड रखा जाता है. गार्डेड मींस रिजर्व्ड. हमेशा इतना गार्डेड रखा जाता है क्योंकि कभी कभी एयरक्राफ्ट भटकते भटकते भी 10-12 नॉटिकल माइल डेविएट कर जाता है. सो दिस इज एरर काउंटिंग होता है ना बियरिंग का. अगर 2% एरर है, 2 डिग्री भी एरर है, तो वो ऐसा भटकते भटकते यहां तक तो आ ही सकता है. सो 15 नॉटिकल माइल का एरिया गार्डेड रखा जाता है. दैट्स व्हाई स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोसीजर में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 15 नॉटिकल का माइल का है. आप इतना अपने अप्रूव से बाएं दाएं चल भी जाओगे, यू आर नॉट गोइंग टू मीट एनी अदर एयरक्राफ्ट. ठीक है? So deviation of more than 15 nautical mile is dangerous for us, and we are going to meet another route if we deviate more than that. So we have only one option. What is that? Rerouting. Got it? With this question. So
This rerouting call will go such, you have been reported about the same on ground. ठीक है, आप जब लाइन अप कर रहे थे टैक्सी के लिए तभी आपको पता चल गया. Now what you are going to see after finding a bad weather indication en route, you are on ground, you are going to discuss with tower. See how it will go. This will go such, Mumbai tower, Vistara 467 on 118.1, Airbus 320, IFR Mumbai to Bhopal, ठीक है, on runway 29er, received bad weather warning on route. सोनगढ़ is a point on route. On route में ही आपको मिलेगा. अगर आप ग्राउंड पे हो तो जब आप फ्लाई करोगे then only you are going to meet सोनगढ़. Now this is your query. What action you have planned? What action you are thinking now? You would like to reroute. So you will say, would like to reroute. आप reroute करना चाहते हो to भोपाल. भोपाल तक जाने के लिए reroute करना चाहते हो. This to भोपाल, if you look at कि आपका structure सही बन रहा है, you can say, or simply you can say, would like to reroute via, ठीक है, दूसरा रास्ता चुनोगे, which you can find whiskey 10 north, whiskey 10 north, whiskey 10. These two routes you will choose, but you have seen कि in between आपके इन दोनों रूट्स के बीच में एक वे पॉइंट भी आता है. Which waypoint comes in between whiskey 10 north and whiskey 10? Can you tell me which MRP comes? Sir, Doti, Apano, then Bodar. ठीक है, these are the waypoints in between whiskey 10 and whiskey 10, because there is a change in routes ना, whiskey 10 and whiskey 10. ये कहाँ पे चेंज हो रहा है दोनों रूट? Over which MRP? मुंबई से देखो. That is Bodar. So you are going to say your route every time. अगर एक रूट है तो उसके वे पॉइंट्स को आप स्किप कर सकते हो. But if there are multiple, it is from Indore. From Indore. Yes, from Indore. ठीक, not over Bodar. तो अगर सिंगल रूट है तो आप उसको डायरेक्ट बोल सकते हो whiskey 10 we would like to reroute via whiskey 10 November or whiskey 10 north. Say it north, November नहीं बोलना है, ठीक है, whiskey 10 north. But you are going to see कि आपको भोपाल जाने में whiskey 10 भी पड़ता है. So if there is a change in route, जिस MRP के थ्रू वो रूट चेंज हो रहा है उस MRP को बीच में लाना है, ठीक है, उसको एज अ वे पॉइंट यूज करना है. हाउ यू आर गोइंग टू यूज दैट? लुक एट दिस स्ट्रक्चर. Here only you are going to see that you are planning to reroute, would like to reroute via whiskey 10 north, Indore, whiskey 10. Got it? Like this. Would like to reroute via whiskey 10 north, Indore, whiskey 10. Revised ETA 1235. And in the case of rerouting, you need to say your endurance.
आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दे रहे हो। तो आप ये बताओ कि आपका एयरक्राफ्ट फ्लाई कितने देर तक करेगा विद दिस फ्यूल। ठीक है। सो यू आर गोइंग टू से इंड्योरेंस आफ्टर रिवाइज्ड ETA, you are going to say endurance 0300 means 3 hours. Endurance 0300. Time now 1020. Vistara 4K7, Vistara 467. Request rerouting clearance. Got it? Let me review this call. As per the question. You are discussing with Mumbai Tower that you are Vistara 467 on 118.1. Your aircraft is Airbus 320. You are IFR from Mumbai to Bhopal. You are standing on runway 29er because your call is you are lined up for takeoff. So you are on runway 29er. You have received bad weather warning on route. रास्ते में आपको bad weather warning मिला। ठीक है। If the question is saying you have received bad weather warning over Songarh, आप एक चीज यहाँ पे ऐड कर सकते हो, received bad weather warning on route over Songarh। ठीक है। Now what you can do, you are like to reroute, so you are going to say would like to reroute via Whiskey 10 North, Indore, Whiskey 10. Then you will reach at Bhopal. That's why you can skip to say Bhopal. Revised ETA यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। I missed that. Revised ETA Bhopal 1235. Your endurance is 0300 means endurance 3 hours. With this fuel you can fly for 3 hours. ठीक है। Your time now 1020. मैंने यहाँ पे टाइम बोलना मिस कर गया, that's why लास्ट में टाइम बोल दिया। Vistara 467, you are requesting rerouting clearance. Got it? Any doubt in this structure? No, sir. So these are the intelligent action that you want to take against this bad situation. ठीक है। अभी देखो, just for a sake, suppose I had made 2 mistake. ठीक है। I had made 2 mistake. टाइम मुझे यहां बोलना था, मैंने नहीं बोला, या पहले ही कहीं बोलना था ड्यू टू आवर पोजीशन रिपोर्ट। मैंने अपना रिवाइज्ड ETA दे दिया 1235, 12:30 बजे पहुंच जाऊंगा। मेरा टाइम ऑफ डिपार्चर है 1015. सो हाउ मच टाइम इट वाज प्लान्ड? 2 hours 15 minutes. जो भी आप इंड्योरेंस बोलोगे ना, इसका प्लानिंग ऐसा रखो, इसका प्लानिंग इंड्योरेंस का ऐसा रखो कि वो आपके मन में स्टैंडर्ड ETA जो एक प्लान कर सकते हो ऑन रूट, उससे ज्यादा रखना हमेशा इंड्योरेंस। ठीक है। इंड्योरेंस ये जो मैंने 3 hours बोला ना, इसको एक प्लान के अकॉर्डिंग हमेशा इंड्योरेंस को ज्यादा रखना, 4 hours 3 hours, मोर देन 3 hours ही इंड्योरेंस रखना, ताकि आपका 2 घंटे का फ्लाइट इस रीरूटिंग के साथ अप्रूव्ड हो जाए। सपोज दिस एज अ कि मुझे मुंबई से भोपाल जाने में 2 घंटे लगते हैं, मैं रीरूट कर रहा हूं ना, तो मैं इंड्योरेंस को 3 घंटा बताऊंगा, तभी तो मुझे अप्रूवल दोगा कि आपके पास इनफ फ्यूल है। यू कैन रीरूट, आप आधा घंटा 45 मिनट ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। ठीक है। सो ये जो इंड्योरेंस का आवर है, इसको हमेशा आप 3 से ज्यादा ही रखना, क्योंकि स्टैंडर्ड कोई भी कॉल नॉर्मल मन में 2 घंटे का प्लान करते हैं इन अ डोमेस्टिक फ्लाइट। होता है ना, जब भी आप प्लान करते हो टाइम एंड एस्टिमेट्स, जनरली इट टेक्स 2 से 2.5 घंटा, इससे ज्यादा का प्लान नहीं हो पाता है मन में, राइट? Yes, sir.
सो इंड्योरेंस आप ज्यादा रखना, तभी आप जब इंड्योरेंस ज्यादा रखोगे तभी आपको इस रीरूटिंग का अप्रूवल मिलेगा कि ओके, ठीक है, ऐसा आप रीरूटिंग प्लान कर सकते हैं। राइट सम की पॉइंट्स regarding this rerouting call. Those key points are: your rerouting call shall contain revised ETA, ठीक है, बिकॉज एक ETA आपने फ्लाइट प्लान में बता के रखा है कि 10 बजे से 12:30 बजे मैं पहुंच जाऊंगा, वो अभी हिडन है, इस कॉल में एक्सपोज नहीं हुआ है, बट कहीं ना कहीं पेपर पे लिखा हुआ है। दैट्स व्हाई इन द कॉल ऑफ रीरूटिंग you are going to say revised ETA. Second thing, you need to say endurance compulsorily, ठीक है, क्योंकि आपने अपने प्लान के अकॉर्डिंग 2 घंटे का फ्यूल भरा as per your approved flight path. Now if you want to reroute, ATC will ask you, tell me your endurance. मैं आपको 2 घंटे का फ्लाइट अप्रूव किया था, अगर आपके एयरक्राफ्ट का इंड्योरेंस मोर देन 2 आवर्स है तभी मैं आपको रीरूटिंग अप्रूव करूंगा, अदरवाइज गो एंड हैव सम फ्यूल लिफ्ट अप, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस रीरूटिंग कॉल शैल नेसेसरली हैव endurance and revised ETA, right? Got this? Yes, sir. So this was the call about your rerouting when you are on ground. Okay. Now with this flight plan only, take another question about rerouting on route. जब आप फ्लाई कर रहे हो तब आप रीरूट कैसे प्लान करोगे, ठीक है। कुछ नहीं, एज सिमिलर टू दिस ओनली। यहाँ पे आपने अपना पोजीशन रिपोर्ट दिया था ग्राउंड के रेफरेंस में, वहां पे आप अपना पोजीशन रिपोर्ट एयर के रेफरेंस में दे दोगे, ऑन एयर इन फ्लाइट, दैट्स इट। पोजीशन रिपोर्ट ही मैटर कर रहा है, आप अपने पोजीशन रिपोर्ट से ही बता पाते हो कि आप ग्राउंड पे हो या फ्लाइट कर रहे हो। रीरूटिंग आप ऑन एयर प्लान करो, ग्राउंड प्लान करो, स्ट्रक्चर, थीम, थ्योरी सेम रहेगा, ठीक है। सो in this question only, write this: the time was 1015, right? Here was 320. Write the question. Write the question that you have been informed about, या फिर you are reported about, bad weather over सोनगढ़, ठीक है, ओवर सोनगढ़, ठीक है। इतना भी क्वेश्चन रह सकता है कि यू हैव बीन रिपोर्टेड अबाउट सोनगढ़, आपको पता चला कि सोनगढ़ के ऊपर बैड वेदर, ठीक है। नाउ दिस विल बी योर इंटेलिजेंस, इफ दिस कॉल इज ऑन रूट, आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस सोनगढ़ से दूर रहोगे, अबाउट टू रीच सोनगढ़, सो दिस कॉल विल ऐड व्हेन यू आर, या फिर while 15 नॉटिकल माइल टू सोनगढ़। जब आप सोनगढ़ पहुंचने से 15 नॉटिकल माइल दूर थे, आपको पता चला कि सोनगढ़ का वेदर खराब है। This means you are in flight, you are flying en route somewhere, right? So understand this call, how it will go. It will go such: you are 15 nautical mile to Songarh. You can look at the chart, that version 2, right? This call will go to Mumbai control. Vistara 467.
on 125 decimal liner, Airbus 320. Sorry for that. Airbus 320 IFR Mumbai to Nagpur. Sorry, Mumbai to Bhopal here. FR Mumbai to Bhopal. Flight level 350. Whiskey 10 South. Radial 120. Correction. Radial 192. As per the calculation. Radial 192. DME 15. Inbound. Shongad. Time now 1035. This was your position report. Now received bad weather information over Songat. This is the information. Now what will be your action? Would like to reroute. अब देखो, as per the previous question, you can have reroute with whiskey 10 north. Now I'm adding a little concept, just had a focus on that. Would like to reroute via flying direct to Apano तक पहुंच गए. देन भोपाल कैसे पहुंचोगे? विस्की 10 नॉर्थ. ठीक है, विस्की 10 नॉर्थ, बोदार, इंदौर, विस्की 10. Now you are going to say about your estimates. Estimating Apano 1050, Bodar 1105, Indore 1125, revised ETA Bhopal 1200, endurance 0300, request rerouting clearance Vistara 467. Tell me any kind of doubt. No, sir, no doubt. Very good. The insertion of flying direct will noted to you, right? Will understood by you. Yes, sir. Very good. Yes, sir. So in this manner, we can say flying anywhere directly also. We can fly directly. If there is no route, we can fly direct to one viewer to another viewer. No objection on that. Okay? But that flying direct shall be planned smartly. Over any situation, over any critical situation, we can have fly directly. हम लोग पहला प्रेफरेंस रूट को देंगे. रूट नहीं मिलेगा, सिचुएशन क्रिटिकल हो जा रहा है, ज्यादा क्रॉस सेक्शन है रूट्स का, then we can choose flying direct. So with the Mumbai control, you told Vistara 467 on 15 decimal liner. My aircraft Airbus 320, I am flying from Mumbai to Bhopal, will be at flight level 35,000 feet
on route Whiskey 10 South. Radial 192 as per the calculation, well noted by you. Very good. TME 15 inbound Songat. Your time is 1035. You have received bad weather information over Songat. You would like to reroute via flying directly to Apano. That is the nearest MRP to you. So you had planned that you will fly direct to Apano. Then you are going to choose Whiskey 10 North. You are going to meet Bodar as a MRP. Then you are going to meet Indore. Then you will take Whiskey 10. You are estimating your direct flying VOR Apano at 1050, Bodar 1105, Indore 1125. You have revised your ETA to Bhopal to the 1200. Endurance more than 3 hours or more than your rerouting time taken. You are requesting clearance. Done? Yes, sir. Very good. Very good. So this is the structure of your rerouting clearance. Anything, any condition, any situation can be added, can be modified. No foundation over any situation. Okay? Have you understood this structure? Yes, sir. Very good. Very good. Any kind of insertion, any kind of your planned action, your action that truly belongs to pilot. Any kind of alteration, any kind of request can be made. Any kind of clearance can be acquired, can be asked to ATC. But you need to just justify your calls. That's it. Every situation-based calls need real-time action and the practical solution. ठीक है? Practical solution every time. कुछ भी आपको लगे, you can think practically. Just justify your calls. Your calls will look very beautiful. Because if examiner find anything extra, definitely they are going to ask you why so. If you justify them beautifully, about your call, about the alteration or change made by you in the call, he will be very happy. बहुत अच्छा खुश होता है वो. Even जब मैं एग्जाम देने गया था, that examiner was talking about any other guy, he was saying कि वो बंदा just smart, वो एक smart लड़का था जिसने पिछला आंसर देके गया. Why? Because he had not used any kind of previous structure based calls. ठीक है, किसी भी टाइप का वो रटा रटाया फ्रेजेस यूज नहीं कर रहा था. बट हिज कॉल वाज दैट स्मार्ट कि वो सिंपल इंग्लिश ग्रामर यूज करते हुए सब कुछ एकदम क्लियर कर दिया था. वो बहुत ज्यादा इंप्रेस था एग्जामिनर, और ड्यू टू दैट ही माइट गोइंग टू पास वन मोर कैंडिडेट. उसी का इंपैक्ट रहेगा. सो एग्जामिनर जस्ट आस्क ए प्रैक्टिकल बंदा, दैट्स इट. अगर आप कोई कॉल स्ट्रक्चर रट के भी जाओगे ना, सपोज आप कोई कॉल स्ट्रक्चर रट के चले गए, आप बहुत फ्रीक्वेंटली बोल रहे हो, उसने गलती से किसी एक पॉइंट पे आपसे क्लैरिफिकेशन मांग लिया, जस्ट टू चेक समथिंग. वो पूछ लेगा कि ऐसा क्यों, एंड इफ यू आर अनेबल टू आंसर दैट, आपका सारा का सारा रटा रटाया प्लान वहां फेल कर जाता है. मेरे साथ मेरे ग्रुप में 3-4 लोग थे, उनका कॉल मेरे से ज्यादा स्ट्रक्चर्ड था, मेरे से ज्यादा फ्लॉलेस था, फटाफट सब कुछ बोल रहे थे, बट किसी एक पॉइंट पे फंस गए थे. आई थिंक उनका ट्रांसमिशन ब्लाइंड में कुछ प्रॉब्लम था. कुछ डिस्कस किया पॉइंट, एंड एग्जामिनर वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज क्लैरिफिकेशन. नहीं हुआ रिजेक्ट. वो समझ जाता है ना आप रट के आए होगे, आपका सेम कॉल स्ट्रक्चर मैच कर जाता है. कई बार एग्जाम में सेम कॉल स्ट्रक्चर मैच कर जाता है, जो आप प्रैक्टिस करके गए हो वही आ जाता है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं होता है. तो यू कैन मेक अ फ्लॉलेस कॉल. बट किसी पॉइंट पे अगर उसने क्लैरिफिकेशन मांगा, आप फंस गए, एक नेगेटिव इमेज बन गया, रट के आया है, और वो खेल बिगाड़ने के लिए काफी है. ठीक है. सो एनी काइंड ऑफ सिचुएशन बेस्ड कॉल, यू कैन यूज योर आइडिया, योर थ्योरी ऑलवेज,
but that should justify your call. Okay, so that's all about weather deviation and rerouting. Tell me any kind of confusion regarding the deviation with weather. No, sir, understood it. Very Just good. need to practice Just using need to that weather practice station. some. You want to practice now, or you'll take it tomorrow? What about this? You want to practice now? Sir, tomorrow will be better. Okay. Okay. Tomorrow we can have much calls other than this also. क्योंकि अभी एक ही call का practice करेंगे. Tomorrow we'll collect more. Now we are going to talk about RVSM. RVSM. Tell me something about RVSM. Whatever you know. Just don't be shy. Don't be uh, anything. Just tell me whatever you know about Uh, RVSM. Sir, RVSM stands for the reduced vertical separation minima. Sir, it is the minimum its vertical distance which is which keeps the aircraft separate is 1000 feet. Is the minimum separation between the aircraft. Previously it was 2000. Now it got changed to 1000 feet. Very good. Very good. And it starts from RVSM range starts from flight level 2900 to flight level 410. Very good. Perfect. Perfect. Good answer. So this is RVSM. Reduce vertical separation minimum. Okay. There were some logic and some kind of practical things that happened with aerospace all over the world. ICAO had just planned to made some kind of modification in the existing approved flights earlier. ठीक है, जितने भी फ्लाई करते थे एयरक्राफ्ट, पहले इकाओ का प्लान था कि वो वाइड अल्टीट्यूड वाइड उनमें कोई भी टक्कर नहीं हो. ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लान किया कि हर एक एयरक्राफ्ट 2000 फीट के डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे. ठीक है, but sometimes you can see if someone is flying manually, if aircraft is being controlled by human directly, अगर कोई पायलट फ्लाई कर रहा तो देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी कि वो लेफ्ट राइट कहीं ना कहीं भटकेगा. दिस इज एरर. दे विल मेक, डेफिनेटली दे विल मेक, नो चांस कि वो डेविएट नहीं करेंगे. आई हैव सीन इन द कॉकपिट मेनी टाइम्स helicopter pilot. I told you sometimes ago that I got a chance to fly with pilot for many days in the helicopter. I have seen ये जो इस कलर का लाइन बनता है ना, मेजेंटा लाइन, जिसको फॉलो करना होता है, हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ डेविएट करता था पायलट, धीरे धीरे ऐसे जाने लगता था. और जब आपका एयरक्राफ्ट डेविएट होता है ना, सपोज कि आपका हेडिंग इस डायरेक्शन में हो गया, ऐसे डेविएट हो गया, तो डॉटेड लाइन बनने लगता है. ऐसा ऐसा करके डॉटेड लाइन बन जाएगा इन द हेडिंग ऑफ योर एयरक्राफ्ट. ऐसा तो कुछ ना कुछ डेविएट करता ही करता था, बिकॉज यू कैन नॉट टेक रिस्क कि वो एकदम मशीन की तरह परफेक्ट काम करेगा. नो चांस कि वो एकदम एक्यूरेट चले. दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी, कुछ ना कुछ एरर करेगा ही करेगा, तो वो डेविएट करता ही करता था. दैट्स व्हाई ICAO has told you take a separation of 2000 feet, make it little clear about your airspace, keep the airspace neat and clean. Whatever the aircraft you are going to fly, take it 15 nautical mile laterally, okay, and 2000 feet vertically separation. इतना तो कम से कम एक रूट पे करो ही करो. बट क्या हुआ कि जितने भी एयरलाइनर आने लगे, एयरलाइनर, not about private jets and all, because private jets is going to fly much height than a commercial flight can take. ठीक है, जो एयरलाइनर आने लगे, जब एयर स्पेस कॉमर्शियल बन गया और बहुत ज्यादा यूज होने लगा एयर स्पेस का, तो इतने ज्यादा ऑपरेटर आ गए, इतना ज्यादा एयरक्राफ्ट हो गया कि फ्लाइट प्लान अप्रूव करने में परेशानी होने लगी. आपके पास कितना रेंज है,
29,000 feet to 41,000 feet, 12,000 feet आता है, right? This is 12,000 feet envelope. आप अगर 2,000 फीट का सेपरेशन रखोगे, then you are going to rarely approve 40 to 50 flights in a day. But if you can see in Indian aerospace only 40 से 50 फ्लाइट तो एक रूट पे कभी कभी हो जाता है। मुंबई दिल्ली 40 से 50 फ्लाइट हो जाते हैं एक दिन में, वो भी सिर्फ मॉर्निंग में। ट्रांजिट करके तो और पता नहीं कितना हो जाए, और उतना ज्यादा रूट्स बनाना पॉसिबल नहीं था। और why 29,000 feet and 41,000 feet? Why this envelope only? एयरलाइनर का जो रेंज होता है जनरली वो इसी एनवेलप में होता है। पैसेंजर कमर्शियल एयरक्राफ्ट का इसी रेंज में होता है। बिजनेस जेट कैन गो 50,000, 53, 52 ग्लोबल एयरक्राफ्ट। योर एम्बरर मस्ट बी ऑन नियर 50। एम्बरर के 135 दैट लेगेसी और ERJ CRJ कोई भी है ना, वो नियर 50,000 फ्लाई करेगा ही करेगा। बिजनेस जेट्स मॉडल बनाते थे ना एम्बरर, not primarily, they are not making airliner earlier. तो इस रेंज में एयरलाइनर के ज्यादा एयरक्राफ्ट आने लगे। So there was a pressure on ICAO कि we need to reduce this separation. इतना लेके काम नहीं चलेगा, इतने एयर स्पेस में इतनी ज्यादा फ्लाइट हो गई कि we need to reduce that separation. ठीक है? So what they did, पहले था सेपरेशन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट। अगर कोई एयरक्राफ्ट सेम डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है तो वो 4,000 का डिस्टेंस, 4,000 फीट का वर्टिकल सेपरेशन मेंटेन करता था, और जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है वो 2,000 फीट का सेपरेशन मेंटेन करता था, राइट? व्हाट हैपेंड नाउ, दे हैड जस्ट मेक इट हाफ, आधा कर दिया विथ सम कंडीशन। डायरेक्टली आधा नहीं किया, आधा कर दिया कि अगर आप सेम डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे हो, यू कैन टेक अ सेपरेशन ऑफ 2,000 फीट, एंड इफ यू आर फ्लाइंग इन अपोजिट डायरेक्शन यू कैन टेक अ सेपरेशन ऑफ 1,000 फीट, राइट? बट इस पे उन्होंने कुछ इंपोज किया कंडीशन, ऐसा आप तब करोगे जब ऐसा होगा। इंपोज किया कंडीशन फॉर व्हाट? फॉर द इक्विपमेंट्स। आप अपने एयरक्राफ्ट में ये सारे इक्विपमेंट्स लगा लो, फ्लाई करो। ये 2,000 फीट का सेपरेशन, 1,000 फीट का सेपरेशन इज नॉट अ डेंजरस थिंग इफ यू हैव दिस, इफ यू हैव दिस, लाइक दिस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अप्रूवल ऑफ स्पेशल ऑपरेशंस। ठीक है, अप्रूवल ऑफ स्पेशल ऑपरेशंस। CR का सेक्शन 8 सीरीज O, सीरीज S, सॉरी O में ऑपरेशन का आता है, S में, सीरीज S में आपको स्पेशल ऑपरेशंस का मिल जाएगा परमिशन। दिस RVSM कम्स अंडर स्पेशल ऑपरेशन रेंज। ठीक है, इसको बोला जाता है स्पेशल ऑपरेशंस। अगर आपका एयरक्राफ्ट RVSM एयरस्पेस में फ्लाई करना चाहता है तो इनिशियली व्हाइल इशूइंग C of A आपको उस एयरक्राफ्ट का स्पेशल ऑपरेशन RVSM अप्रूव करवाना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट इंटर इन दिस रीजन। सिंपली you cannot enter in this region if you don't have approval of special operation by DGCA in India and with any national aviation authority in foreign. ठीक है? So when you can fly RVSM if you are having approval of special ops. ठीक है? Then yes sir. What are the other special ops? I think you had this induction training with us, right? When you were in Airworks. Yes sir. What are the other special ops? I cannot recall sir. Okay, no problem. In India, basically, there are RVSM, NHLA, DVN,
some kind of thing comes under special ops, right? So RVSM is one of the special ops. ठीक है. What is the standard vertical separation? Conventionally, earlier in the early days of aviation, we need to take a separation of 4,000 feet for same direction flight and 2,000 feet for opposite directional flight. By this figure, you can understand what is same directional flight and what is opposite directional flight, right? Now, it has been reduced to just half of it. 2,000 feet for same directional flight, 1,000 feet for opposite directional flight, right? Now, the envelope of this flight level, the airspace comes under RVSM or CVSM. That is the critical airspace of 29,000 feet to 41,000 feet, because many of the airliner aircraft fly in between. Then, now, what is the requirement imposed by National Aviation Authority to fly under this RVSM? Over the equipments only. Equipments का limitation लग गया. ठीक है. अगर आपका out of 2 and 3, if you have non-equipped aircraft or non-functional equipment also, सिर्फ equipment availability से काम नहीं चलेगा. That should be functional. Then only you can enter RVSM. Otherwise, आपका RVSM approve होने के बाद भी RVSM नॉन RVSM बन जाता है, राइट? सपोज आपको इनिशियली RVSM का अप्रूवल मिल गया, बट उसके अंदर जो कंपोनेंट फिट करवाए गए थे आपके एयरक्राफ्ट में, अगर टेम्पररीली वो नॉन फंक्शनल हो गया, एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट यू बिकम नॉन RVSM एयरक्राफ्ट. गॉट दिस? जैसे ही वो फेल हुआ, आपका एयरक्राफ्ट नॉन RVSM हो जाता है. व्हाट आर दिस? यू नीड टू हैव 2 independent altitude measurement equipment. That's why in the many business jet aircraft you may have seen कि total 4 pitot static system होते थे, right? Pitot static system 4 होते थे. और रेडोम सेक्शन में एक एरिया ऐसा करके मार्क किया जाता था RVSM करके, right? Yes. So in this area, RVSM area, वो क्या होता था? पिटॉट स्टैटिक सिस्टम. एक जो आपका रेगुलर पिटॉट स्टैटिक डाटा ट्रांसफर करेगा विद द रिलेटेड ऑफ ऑल्टीट्यूड, एयर स्पीड, वर्टिकल स्पीड, सच थिंग्स. एक ऑल्टरनेट होना चाहिए, सेम सिस्टम का कॉपी डिट्टो. ऐसा नहीं कि ऑल्टरनेट के नाम पे एक लगा दिया स्टैंड बाय. नो, जिस एयरक्राफ्ट सिस्टम के थ्रू आपका नॉर्मली एयर स्पीड मेजरमेंट होता है, जस्ट डुप्लीकेट ऑफ इट. यानी अगर आप 2 पिटॉट स्टैटिक सिस्टम यूज करते थे नॉर्मली टू मेजर द ऑल्टीट्यूड, वर्टिकल स्पीड एंड एयर स्पीड, सेम आपको दूसरा पिटॉट स्टैटिक सिस्टम लगाना पड़ेगा. दैट वाज द वन रिक्वायरमेंट. व्हाट आर द अदर्स? द अदर्स वेयर यू शुड हैव SSR, secondary surveillance radar. What comes under secondary surveillance radar? Transponder. What does it really mean? It means primary surveillance radar is such कि वो जब अपना रेडियो ट्रांसमिशन सिग्नल ट्रांसमिट करेगा ओवर विथ एनी सरफेस, दैट विल बी बाउंस्ड बैक. इसी का एनर्जी यहां से बाउंस बैक होके आएगा और उससे जो भी इंफॉर्मेशन ये गैदर करेगा, उस टाइप के सिस्टम को बोला जाता है प्राइमरी सर्वेलेंस रडार. ठीक है. सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार का मतलब हुआ कि आपने एक अपने इक्विपमेंट से कुछ रेडियो सिग्नल भेजा, उस रेडियो सिग्नल को इस सिस्टम के द्वारा एक्नॉलेज किया जाएगा और इसका प्रॉपर रिप्लाई भेजा जाएगा विद द न्यू रेडियो सिग्नल. इट कम्स अंडर सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार. यानी आपके पास ऐसा ट्रांसपोंडर होना चाहिए, ऐसा रेडियो इक्विपमेंट होना चाहिए जो इंटेलिजेंट हो, जिसके पास इंटेलिजेंस हो.
ट्रांसपोंडर के पास इंटेलिजेंस होता है। हाउ यू नो कि ट्रांसपोंडर के पास इंटेलिजेंस होता है? इट हैव एयरक्राफ्ट एड्रेस इंफॉर्मेशन, कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर है, कौन से ऑपरेटर का एयरक्राफ्ट है, किस अल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा है, मॉड ए एंड मॉड सी, राइट, एयर स्पीड क्या है, वर्टिकल स्पीड क्या है, सच डाटा transponders gathers. That's why this transponder become intelligent. ठीक है? That's why transponder is needed to fly under RVSM. आपको transponder चाहिए, वो भी functional चाहिए, तभी आप RVSM में enter कर सकते हो। टू independent altitude measurement system, ठीक है, और altitude alerting system भी चाहिए। EHJ पैलेट में आपने पढ़ा होगा, एक अल्टीट्यूड रिपोर्टिंग सिस्टम आता है कि जब भी आपके एक फिक्स्ड अल्टीट्यूड से एयरक्राफ्ट डेविएट करता है या फिर आपका वर्टिकल स्पीड बहुत ज्यादा कम या ज्यादा होने लगता है, डेविएशन आने लगता है, सो दिस अल्टीट्यूड रिपोर्टिंग सिस्टम विल स्टार्ट एनंसिएटिंग, राइट, आइदर विजुअल और ओरल। So you should have two independent altitude measurement system and at least one altitude reporting system. ठीक है? Alerting and reporting system. You should have one transponder set, एक set of transponder. ठीक है? एक ही एंटीना से ट्रांसमिट करे, रिसीव करे, doesn't matter, बट आपके पास ट्रांसपोंडर और रिसीवर होना चाहिए। ट्रांसपोंडर में ट्रांसमीटर एंड रिसीवर होना चाहिए। Then your aircraft should have equipped with either ACAS or TCAS. Okay, both of the terminology had been well understood by you. I think you should know about ACAS and TCAS. What are these? These are the simply a collision avoidance system. Okay, these are simply collision avoidance system. These are also intelligent. These are also intelligent. How it become intelligent? With the help of transponders and other aircraft instruments, these ACAS and TCAS system either share warning or alert messages to the pilot, both oral and visual, or they will do anything smartly to prevent such collision. There are two things, right? TA and RA. One is traffic advisory and second one is, what is the second one? Resolution advisory. Resolution advisory. TA में वो आपको अलर्ट देते रहेगा, बट रेजोल्यूशन एडवाइजरी इफ दे सी कि अब कोलिजन हो ही जाएगा, बहुत ज्यादा कोलिजन क्लोज हो गया एयरक्राफ्ट, वो आपके एयरक्राफ्ट को ऑटोमेटिकली राइट टर्न कर देगा 15 डिग्री। जो भी दो एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, दिस कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम इज सच कि वो राइट साइड में टर्न कर देगा। इसका राइट हो गया इधर, इसका राइट हो गया इधर, 15 डिग्री ऑटोमेटिक। दिस इज द रिजोल्यूशन दैट टिकास और आकाश टेकन। ठीक है? Yes, sir. Simply RVSM Aerospace needs an intelligent instrument system. Intelligent instrument system कि इतना इंटेलिजेंट हो कि सिर्फ चिल्लाए नहीं, मौका आने पे काम भी करे, सिर्फ वार्निंग नहीं दे, मौका आने पे, टाइम आने पे उसको प्रिवेंट करने के लिए सफिशिएंट एक्शन ले, इस टाइप का उसको चाहिए इक्विपमेंट। ट्रांसपोंडर्स क्या करता है, आपस में एयरक्राफ्ट का डेटा शेयर कर देगा। इफ यू आर हेयर एंड सम एयरक्राफ्ट इज हेयर, ऐसा करके आपको सब दिखाएगा कि दिस इज विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर किलो, फ्लाइट लेवल इतना इतना इतना, ये ट्रांसपोंडर में आ जाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि वट एवर द एयरक्राफ्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू, इतने एयर स्पीड से फ्लाई कर रहा है, इतने अल्टीट्यूड पे है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहा, उसके ऑपरेटर का नाम ये रहा, लाइक दिस। ठीक है? दिस मच इंफॉर्मेशन यू नीडेड with this intelligent aircraft instruments. This is the minimum requirement to enter under RVSM. ठीक है? Out of these, कुछ भी कभी भी फेल हुआ at this particular moment,
यू आर नॉन आरवीएसएम, तुरंत आप नॉन वीआरएसएम घोषित कर दिए जाओगे। गॉट इट? Yes, sir. So if pilot feel that there is any failure वेदर का निगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है, आपके पिटॉट में जाके आइस जम गया, you are not getting your particular altitude and airspeed data correctly, any kind of failure, any kind of contingency received by pilot, you should notify immediately। जैसे ही आप आरवीएसएम से नॉन आरवीएसएम हुए या आरवीएसएम के अप्रूव्ड इक्विपमेंट में किसी भी तरह का फेलियर आया, तुरंत आपको एटीसी को रिपोर्ट करना है। दैट इज द रूल, ये रूल है। एनी काइंड ऑफ कंटीजेंसीज फील अंडर आरवीएसएम, इमीडिएटली यू नीड टू रिपोर्ट एटीसी, ठीक है, इमीडिएटली, क्योंकि वो काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, किसी भी टाइप का मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। सो आपको एटीसी को तुरंत इंटीमेट करना है, ठीक है। व्हाट आर द इक्विपमेंट फेलियर्स दैट यू नीड टू नोटिफाइड इमीडिएटली विद द एटीसी? फेलियर ऑफ ऑटोमेटिक अल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम। दिस अल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम comprises of altitude, alerting and reporting system। उन दोनों मिला के बन गए अल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। लॉस ऑफ रिडंडेंसी और अल्टीमेटरी सिस्टम। लॉस ऑफ रिडंडेंसी, रिडंडेंसी मीन्स होता है कि आपको एक सिस्टम दिया गया है, ये फेल हो जाएगा तो फेल सेफ में जो दूसरा फीचर दिया गया है इसको बोलते हैं रिडंडेंट आइटम, ठीक है। विद द ब्रॉड टर्म इट नोन एज रिडंडेंसी, कि फेल सेफ फीचर में आपको दो इक्विपमेंट दिए गए हैं। लॉस ऑफ रिडंडेंसी मीन्स आइदर ऑफ दे आर फेल्ड, यू हैव लॉस्ट ऑफ योर रिडंडेंसी, आपके पास दूसरा सिस्टम नहीं बचा, ठीक है, एज अ स्टैंड बाय। सो एनी काइंड ऑफ लॉस्ट इन रिडंडेंसी ऑफ अल्टीमेटरी सिस्टम shall be transmitted to ATC. Can you explain this line for me? What does mean loss of redundancy of ultimatory system with the example? What do you mean by this line? Like ultimate failure. If the standard altimeter fails. हाँ, ठीक है, स्टैंड बाय अल्टीमीटर फेल्स, ठीक है, then you have lost redundancy of altimetry system, or these two pitot-static में any pitot-static stop working like this, ठीक है। Yes, sir. Sir, on first point, what did you say? What do you think it comprises the altitude control systems? अच्छा, automatic altitude control system, it comprises of altitude reporting plus alerting, ठीक है। अल्टीट्यूड रिपोर्टिंग थ्रू ACARS, रिपोर्ट भी करता है ना एयरक्राफ्ट का अल्टीट्यूड टू द ग्राउंड, एंड अल्टीट्यूड अलर्टिंग, कि जब आपका अल्टीट्यूड वेरी करेगा या आप मैक्सिमम हाइट पे रीच कर जाओगे तो वो अलर्ट भी करेगा। रिपोर्टिंग प्लस अलर्टिंग सिस्टम combinedly known as control system. Got it? Yes, sir. Then if you have loss of thrust, how will you get loss of thrust? If your engine stop working or engine have failed और engine का performance lower हो गया, engine have failed or engine of stop working in case of engine surge, stall or loss of fire, loss of fire in combustion chamber means ignition, with any case combustion chamber बंद हो गया, वहां पे फ्यूल बर्निंग स्टॉप होगी, सो यू आर गोइंग टू फेस लॉस ऑफ थ्रस्ट। और आपके इंजन में, ठीक है, इंजन में आइस चला गया, बहुत ज्यादा कोल्ड एयर चला गया, तो उससे इंजन के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, आपको एप्रोप्रिएट थ्रस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। सो लॉस ऑफ थ्रस्ट अगर हो रहा है या फिर
loss in performance of engine, then also your RVSM is in danger. ठीक है? Then any other equipment failed. Those equipments were important for the purpose of maintain your flight level. What does it really mean? Autopilot. इतने बड़ी लाइन का मतलब है autopilot. Autopilot was responsible to maintain your flight level, right? To maintain your flight level. इसीलिए तो autopilot लाया कि पायलट मिस्टेक कर देगा. तो autopilot लाया फ्लाइट लेवल को मेंटेन करने के लिए, ताकि वो क्लियर्ड फ्लाइट लेवल उसको मेंटेन कर पाए. बट अगर ऑटोपायलट फेल हो गया, योर एयरक्राफ्ट विल बिकम नॉन RVSM. Got it? Yes, sir. So you can combinedly note in your notebook. If इन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लेना, ठीक है? Tomorrow when we'll have more students, like 2 of us will join, because they are also waiting to give the exam in Chennai session. Tomorrow मैं इसको note down करवा दूंगा about each and every points. For today, if you want to read it, you can go through this note, or you can make your own note as per this paragraph. ठीक है? अपने लैंग्वेज में इस सब चीजों को आप नोट कर लेना. खुद से लिखोगे, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, right? So any kind of Yes, sir. any kind of failure of approved equipments take you to the non-RVSM. ठीक है? non-RVSM. ठीक है? non-RVSM एक ऐसा एयरस्पेस है, सॉरी, RVSM एक ऐसा एयरस्पेस है. आप अगर नॉन RVSM होते हो किसी भी रीजन से, you are not fit to fly under RVSM because of these contingencies. Means failure of these equipments. If you become unfit to fly under RVSM, immediately आपको रिपोर्ट करना है. किसको? इमीडिएटली आपको रिपोर्ट करना है ATC को. ठीक है? ठीक है? And if ATC is not available, in any case, आपको तुरंत डेविएट करना है with the standard deviation procedure. And what is the standard deviation procedure? You need to climb up or down for 500 feet or 300 feet. 300 to 500 you can take. Here you can find this 500 only, but you can have a deviation of 300 to 500 feet. Both are approved. Okay? You can either climb or descend to 300 to 500 feet. You can have a deviation of 15 nautical mile in route. इस रूट से 15 nautical mile बाएं या दाएं जा सकते हो. इस एयर स्पेस से 300 to 500 feet up या down जा सकते हो. Understood the use of standard deviation procedure under RVSM? Yes, sir. और अगर आपका sir, हाँ, sir, in that picture, left side diagram is written non-RVSM. हाँ, ये बस आपको समझाने के लिए, ये जो डायग्राम मैंने बनाया ना, ये जस्ट समझाने के लिए, बिकॉज रूट तो यहाँ भी है. ठीक है? No, sir. This, sir, can you scroll down, sir? Yes, sir. Here, like this one, this side is conventional vertical separation minima, right, sir? Yes. You wrote non-RVSM, no? That's why non-RVSM means CVSM, conventional. Okay. Okay. Non-RVSM means CVSM. ठीक है? अभी के टाइम पे CVSM वर्ड ओमिट होना स्टार्ट हो गया, बिकॉज इसका कोई यूज ही नहीं बचा ना. Either you are RVSM or non-RVSM. Got it? Okay, sir. Then, sir, below the RVSM range, that is below flight level 2990, then to that, what we will say? Non-RVSM, no problem. You can simply that also non-RVSM. Okay. Non-RVSM. Okay, sir. Below that, you are in non-RVSM airspace. ठीक है? Here,
Here you are under RVSM airspace with non RVSM capability. ठीक है? Okay, below sir. below 29,000 feet and 41,000 feet, nobody will ask you whether you are RVSM or non RVSM. But you can say below 29,000 feet and 41,000 feet, you are under non RVSM airspace. ठीक है? वो airspace है. यहाँ पे आप RVSM airspace में हो with non RVSM capability. Why non RVSM capability? Because some of the aircraft equipments has been failed. Got it? Yes, sir. अब अभी के टाइम पे सीवीएसएम का कोई कंसेप्ट बचा नहीं, अदर आरवीएसएम बोलते हैं या नॉन आरवीएसएम बोलते हैं. ठीक है, डन. सो दैट वाज द स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोसीजर अंडर आरवीएसएम. ठीक है, एट द मोमेंट you get any kind of contingencies, you just need to immediately report to the ATC. If ATC is not available, you need to take a standard deviation action तुरंत. ठीक है, आप स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग डेविएट करोगे इमीडिएटली और उसी पे कंटिन्यू फ्लाई करोगे. वेट करोगे टू एटीसी कम इनटू द कॉन्टैक्ट. अगर कभी कॉन्टैक्ट में आया तो आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे कि मैंने डेविएट किया था ड्यू टू दिस रीजन. ठीक है, अगर नहीं किया तो आप कंटिन्यू उसी डेविएटेड फ्लाइट पाथ पे फ्लाई करोगे. जैसे ही आपका नजदीक हुआ डिसेंडिंग, एज पर योर अप्रूव्ड फ्लाइट पाथ यू विल डिसेंड एंड लैंड. ठीक है, एनी हाउ दिस इज अप्रूव्ड प्रोसीजर. आप बोलोगे सर एटीसी से कभी बात ही नहीं हुई, एक तो आरवीएसएम से भी गया, डिसेंड भी नहीं हो पाऊंगा. नहीं, आप जब तक आरवीएसएम एरोस्पेस में फ्लाई करने का आपका प्लान था तब तक आप डेविएटेड पाथ पे फ्लाई करोगे. जब आपका आरवीएसएम इन्वेलप खत्म होने वाला है, मींस यू नीड टू डिसेंड, वापस आप अपने अप्रूव्ड फ्लाइट पाथ पे आ जाओगे. ठीक है, आरवीएसएम को खत्म करके उसके अलावा आप अपने अप्रूव्ड फ्लाइट पाथ को फॉलो करोगे टू लैंड और टू डिसेंड. गॉट इट? Yes, sir. So this is the deviation. Deviation, why this has been called deviation? Because every time you are having some hope, you are having hope कि अभी जो मैं ये डेविएट किया हूं ना, इसके बाद मैं कहीं ना कहीं तो अपने अप्रूव्ड फ्लाइट पाथ के अकॉर्डिंग डिसेंड करूंगा और अप्रूव्ड फ्लाइट पाथ के अकॉर्डिंग लैंड करूंगा. कहीं ना कहीं तो एटीसी मेरे कांटेक्ट में आएगा. अगर अल्टीमीटर फेल हो गया तो मैंने पाप थोड़ी कर दिया, हमारे पास दूसरा इक्विपमेंट अवेलेबल है. With this failure, I am unable to fly under 29,000 feet to 41,000 feet. Other than this envelope, I am a king. ठीक है, इसके अलावा तो मैं फिर से राजा हूं. So that's why this has been called a deviation only. This is not a rerouting, not a alteration, not any kind of serious non-compliance. This is a deviation because a failure of some of the item made you to unable to fly into this airspace. ठीक है? Yes, sir. So this was it about RVSM and their standard deviation procedure. If you want to read more about RVSM, because this is a popular topic, in part 2 Viva, they may ask you, definitely they may ask you what is RVSM. These things only they will ask you to tell. ये जो मैंने समरी बनाया है ना, इसी चीज को वो सुनना चाहेंगे. क्यों, कैसे, हाउ. मीन्स वो व्हाट, हाउ, तीनों डब्ल्यू है ना अपना, व्हाई, व्हाट एंड हाउ वाला, वही आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि यही एयर स्पेस क्यों, एंड व्हाई ट्रांसपोंडर. ट्रांसपोंडर में ऐसा क्या है कि हमको नॉन अर्वेशन कर देगा. व्हाई एकास या टिकास, ऐसा क्या है इकास या टिकास में कि मैं नॉन अर्वेशन हो जाऊंगा. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल हैव. सो यू नीड टू एक्सप्लेन. दो ट्रांसपोंडर हैव दिस फीचर, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम नॉन आरवीएसएम हो जाएंगे. दो आकाश टेक्स दिस मच फीचर टीए आरए, अगर ये सब नहीं हुआ तो हम नॉन आरवीएसएम हो सकते हैं. लाइक दिस. सो यू नीड टू एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी सिस्टम इन द पार्ट 2 वाइवा. गॉट इट? Yes, sir.
So if you want to read more on RVSM, just follow this here. You will have multiple concept and detailed description of RVSM. Here I had summarized the RVSM theory, and this was for you. So we'll take a leave for today. We'll see the call structure of RVSM tomorrow. RVSM is very important for part 2 BIVA. You can have read from here. Got it? Yes, sir. So we'll take a leave for today. Good night. Okay? Good night, sir. Good night. See you tomorrow.